Welcome to our channel, the Patra Ghosh family, and welcome to the segment Dare to Dream. सपना देखो और सपने को पूरा करो. सपना देखो और उसको हकीकत भी बनाओ. Today we have a special guest with us. He is none other than the Senior Director of Data Engineering at Visa. But before we begin, please, it's a humble request to you to like, share and subscribe to our channel and put in your comments with any questions you have. This will encourage us to come up with more such videos. Thank you, Darshak, for being on the show. It's an honor and a privilege to host you. Before we actually begin, I want to ask you, for audience, can you tell us a bit of your background? Definitely. And first of all, thank you, Nilajan, for having me here on the show. It's a great opportunity to share my experience with the audience and to the awesome listeners that you have. So a bit about myself. So I did my Bachelor's of Engineering from G.H. Raisoni College of Engineering from Nagpur. Sure. And right now I am a Senior Director at Visa, leading a team of about 35 people reporting into me in Austin. And we are building a new team based out of Bellevue in Washington. And the portfolio that I manage span across multiple regions, North America, Europe, Asia Pacific. So it's a pan-world project that I manage currently. Wow, that's awesome. And how many years you are in Visa? Visa on and off, I've been about 15 years. So most of my career I have spent in Visa. I started my career as a contractor for Visa. And then when they built their office out of Austin back in 2013, I joined Visa as a full-time employee here. Wow, that's almost 15 years of your career in Visa, which is a lot. Yeah. So tell us a bit of your growth trajectory. I mean, how did you start? And what was the growth? Right. So I'll start from the beginning, right? Like from my college days. So it was a bit of a struggle, first of all, to get into a good college, right? At that point of time, you have so many different entrance exams. I went to Bangalore. I did all the, even went to Gujarat for Ahmedabad's universities. Then I tried in Mumbai. I even tried locally in Kolkata and, West Bengal region. And finally, while, coming back from one of the interviews in universities, while we were coming back, one of our neighbors in the coach of a train told us, why don't you try Nagpur? It's a hub for education. So that is when we started digging into the region, and this was a new college that was coming up. It only had a couple of years of, existence. But the brand had very good name, so we went through that and we enrolled in, and luckily I got through the college. And even in the college, the 4 years were one of the best, I would say. Made very good friends, lifelong friends, you can say. And but again, it was not all hunky dory. Life was not that simple. I was not selected out of campus recruiting. So that period of time after college was, very depressing to find a new job. What was your major? So I did my majors in computer science. Wow, okay. Yeah. And since the college was new, it had limited opportunities for, campus recruiting. We only had a few companies and few slots from the region. And that was one of the reasons why, and there were multiple factors, Some were my undoing, some universities, because of which, as I mentioned, I did not get it. But then I got an opportunity to expand my skill set in computer science through NIIT. At that point of time, it was a very good training center for computer science students who even don't have any background in computer science. They can also come in and expand their skills. So via NIIT, they had their placement course, and through which I got into a very small company based out of Kolkata known as RS Software. Okay. And luckily that company had recently got major project in Visa. Okay. And that is how I got introduced to Visa very early in my career. And I spent few years in Kolkata before I got an opportunity to come to on-site and do projects here. And from there I was able to show my skills to my leaders here in Visa, who eventually helped me to come here permanently and then spend all these years in US. Wow, that's an incredible journey, I would say. So आपका 15 साल एक कंपनी में, तो अभी का ट्रेंड है कि 2-3 साल आप एक कंपनी में रहो, उसके बाद स्विच करके ग्रोथ के लिए दूसरा कंपनी में चले जाओ. पर आपका
कुछ career trajectory is kind of different, like compared to the present trend. तो आपका क्या मानना है कि like you should stick to a company, go for the growth within the same company, कि आपको लगता है कि switch भी करना मतलब जरूरी है? तो what is your thought? नहीं, ये आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया अभी कि आज का ट्रेंड अगर आप देखो तो लोग हर 2-3 साल में कुछ स्विच करना चाहते हैं एंड दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू ऑल द टाइम. सो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है. इफ यू स्टे लॉन्गर इनटू द कंपनी तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है, you know a lot about the business and you can find opportunities internally to grow, right? लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कि वो स्टैगनेंट हो गए हैं और पेशेंस नहीं है कि तू राइट द स्टॉर्म जो कोई कहते हैं ना, तो उनको वो पेशेंस नहीं है, तो दे टेंड टू जंप. एंड अगेन जंपिंग इज नॉट बैड. इफ यू आर नॉट हैप्पी इन द पोजिशन और इन द जॉब दैट यू आर डूइंग, देन यू डोंट नीड टू स्टे. You can look at opportunities internal, you can look at opportunities external. तो ये जो है एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि आपको लॉयल्टी की तरफ जाना है टू स्टे इन वन रोल और वन कंपनी फॉर लॉन्ग, या आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी है. गो टू अ कंपनी लाइक Amazon एंड लर्न देयर कल्चर. फिर वहाँ से आप जाइए, कोई गूगल में ट्राई कीजिए, फेसबुक में ट्राई कीजिए, फिर वीज़ा में आइए. तो वहाँ पर अलग अलग कल्चर सीख के भी लोग काफ़ी एक्सपीरियंस एंड यू गेट इट ऑल राउंड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विच इज़ ऑल्सो गुड. क्योंकि आप जैसे अमेजोन में जाते हैं तो आपको बहुत सारा AWS वगैरह के नॉलेज मिलता है. गूगल में जाएंगे तो गूगल के स्पेसिफिक टूल्स के नॉलेज मिलेंगे. तो आपको बहुत वेरियस एक्सपोजर मिलता है जो आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड द सिचुएशन दे आर इन. So I have been lucky enough that I got that opportunities internally to grow. जैसे मैंने कहा एज ए कॉन्ट्रैक्टर आया था US वीज़ा के लिए, एंड देन आई गॉट बोर्ड, बहुत सैचुरेशन लग रहा था. So that is when I decided to make a move. So मैं न्यू जर्सी में एक हेक्सावेयर करके कंपनी में ज्वाइन किया था, जहाँ पर वहाँ के क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, एंड इट वॉज गोइंग प्रीटी वेल. बट जो वहाँ का वेदर था, आई डेंट लाइक वहाँ का वेदर, स्नोई एंड इट वॉज टू मच फॉर अस. घूमने के लिए जाओ ठीक है, रहने के लिए आई डोंट नो, नॉट फॉर मी. तो उसी टाइम में जो मेरे प्रीवियस मैनेजर्स थे, आई वॉज इन टच विद देम एट वीजा. यस. ओके. सो आई वॉज इन टच विद देम. तो मैंने ऐसे ही उनको एक मेल किया था. उनकी जो टीम थी जिनको वो सपोर्ट करते थे, उन्होंने वर्ल्ड सीरीज जीता था. दैट वॉज द सैन फ्रांसिस्को जायंट्स. मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड उनका रिस्पॉन्स ऐसा है कि व्हाट, आई एम ओपनिंग अ पोजीशन इन वीज़ा इन ऑस्टिन, आर यू इंटरेस्टेड. तो आजकल की जनरेशन को मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेटवर्किंग मत भूलिए, आप स्विच कीजिए. नो देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट, बट डोंट ब्रेक इन बैड टर्म्स. यू नेवर नो आपके कहाँ पाथ क्रॉस हुआ है. सो कीप नेटवर्किंग, कीप मीटिंग न्यू पीपल, एक्सपेरिमेंट, डोंट स्टॉप लर्निंग. लर्निंग इज समथिंग दैट यू शुड नेवर स्टॉप. तो यही ऐसे ही जो है, मतलब either ways both options are open. I mean, there's nothing bad about either of them. Perfect. That's really great to know. So you did mention that you built multiple teams across US and across geographies. So what do you think? I mean, and you might have taken a lot of interviews so far. So what are your thoughts about technical skills versus soft skills? Like, which is more preferable, or probably, I mean, what is your thought on that? This is a very good question, which I get from a lot of candidates that I interview. They ask me very similar questions. तो इसमें क्या है कि टेक्निकल इज़ वेरी क्रिटिकल, बिकॉज टेक्निकल के बिना आप गेट में एंटर नहीं कर सकते. तो टू एंटर इनटू अ न्यू रोल, टू एंटर इनटू अ कंपनी, टू ग्रो, टेक्निकल स्किल इज़ अ मस्ट. लेकिन आप अगर करियर एडवांसमेंट देखते हैं, तो टू ग्रो योर करियर और टू गेट इनटू मोर लीडरशिप पोजीशंस, सॉफ्ट स्किल हैज़ टू टेक ओवर. क्योंकि उसमें क्या है कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आप अलग अलग टीम्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं. आप टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप सिर्फ एक कॉर्नर में बैठ के काम कर रहे हैं, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रो. सो देन योर कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड योर लीडरशिप स्किल्स, योर बिहेवियर स्किल्स, ये सब टेक ओवर करते हैं. And more as you grow in your career, then technical, yes, you have to learn new technologies, you have to grow technically, you have to be learning cutting edge technologies which are right now. For example, जैसे अभी generative AI है, या आप डेटा साइंस कहिए, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना ज़रूरी है. लेकिन आप सॉफ्ट स्किल्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर सर्टन
time, soft skills will take you further. Technical will only take you to a certain level. That's really great to know. और एक चीज है कि you are in Austin and you have grown the Austin team. You were one of the first few people to be part of the Austin office, visa office. So can you take us through the levels, different levels of software engineering, and also if you can give us some insight about the salary ranges for Austin? Yeah, definitely. तो ऑस्टिन में जैसे अब लेवल्स आप देखें तो बहुत सारे लेवल्स है. दे आर लाइक starting from L3, L4 all the way till L8, L9, L10 levels, right? Now some companies call it L3s to L10, some will call it I3s to I10s, like individual contributors. So there are multiple levels, right? तो अभी आप अगर मैं इसको broader segment में करूँ तो जैसे बोलते हैं कि entry level engineers which are like L3, L4s, I3, I4s, तो उनकी सैलरी रेंजेस समझ लीजिए कि $70,000 to $100,000 के रेंज में रहती है. अब दिस इज जस्ट बेस सैलरी, राइट? सो अब बहुत सी कंपनीज में क्या रहता है, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सैलरी और कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी एज दे कॉल इट. एक तो बेस है विच इज फिक्स्ड, जो आपको मिलना ही है. देन कम्स अ बोनस. सो नाउ दैट बोनस कुड बी अ कैश बोनस और एन इक्विटी बोनस. तो एक कैश बोनस का कंपोनेंट रहता है, दैट इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर सैलरी, starting from all the way from 3 to 5% till 25-30%, and then based on your performance company can double it, triple it, you know, जो भी है. And the third component, which is your equity or stock options या stock bonuses, so that is the third component which adds on top of it. तो ये तीन component को मिलाकर अगर आप average करते हैं तो it could go anywhere from 80-85,000 for a entry level engineers to 100K for a mature entry level engineer. तो ये हो गया एंट्री लेवल. फिर अपना नेक्स्ट सेगमेंट आता है मिड लेवल इंजीनियर्स विच आर लाइक योर L5, L6, मे बी लोअर लेवल L7. तो वो लेवल पर अगर देखें तो वो रेंज आपका जाता है अराउंड 100 से 150K के बीच में. अगेन दिस इज बेस. अब हर कंपनी का अलग होता है और उसके ऊपर बेस के ऊपर आपका इक्विटी होता है, भी है और कैश बोनसेस भी होते हैं. कंपनी बोनस, yes. Okay, and 100 to 150K is for the base salary. That's the base segment. Okay, so that's great actually. Right. So for let's say a senior level software engineer might get up to almost 160, 170K depending on the performance of the company as well as the performance of that individual. Right. At the same time, that means almost like Indian rupees में अगर पकड़े तो like 1 करोड़ के ऊपर सैलरी होते हैं उन लोगों का. हाँ. तो अगर आप देखें कि मिड लेवल इंजीनियर का मिड पॉइंट अगर आप देखें तो उसका अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूँ एंड इफ आई ऐड ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स इट कुड गो ऑल द वे टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 175 to 200K. Wow, for a senior software, for a mid level senior software, मतलब समझिए हाई लेवल I5 या L5 से I6 के लेवल में कीजिए तो. एंड अगेन ये तो क्या है कि हर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. कुछ कंपनीज में जैसे कैश बोनसेस फिक्स रहते हैं, कुछ कंपनी में कैश बोनसेस वेरिएबल रहते हैं. बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जैसे आपने कहा, आप इंडियन रुपी के कंपैरिजन में 1 करोड़ से 1.2 करोड़ के बीच में इट कैन इजीली गो फॉर अ मिड लेवल इंजीनियर. और जो हायर जैसे आप ग्रो करते हैं तो हाई लेवल में देन स्काई इज योर लिमिट, राइट? 150 से लेकर आप शुरू करो तो यू कैन गो 300, 400. आई मीन देयर इज नो लेवल. इट ऑल कम्स फ्रॉम आपका पहला एक्सपीरियंस क्या है, आप जैसे जंप करते हो तो आपकी सैलरीज भी वैसे जंप करती है. तो ये सब आप अगर ये कीजिए तो सीनियर से अगर आप L7 या उस लेवल में अगर जाते हैं तो अगेन स्काई कुड बी द लिमिट. Wow, that's great to know. And this salary range is for Austin. I mean, this is Austin. Yes. Again, if you go to California, the West Coast or the East Coast, the salary will again differ across regions within the US. Right. So it was good. I mean, it was great talking to you, Darshak. Thank you so much for your time. And great to know about your background, also about visa, your experience, and moreover, like getting to know about the salary ranges. So viewers, I mean, we intentionally made 2 episodes out of this to get more time from Darshak to effectively use his time and also make sure that we can provide as much information as possible to you. So we will come up with the second episode after this with more insights on how he feels about the IT industry. Where is data engineering going from generative AI to big data to traditional databases like Oracle or SQL Server, what we used to have. So stay tuned for the next episode, which will be coming soon with Darshak again. And till that time, stay tuned and dare to dream. For the time being, bye.